1 defiant, adjective. Nider, ढीठ, बेबाक. Showing defiance. Synonyms: intransigent, resistant, obstinate, uncooperative, non-compliant, recalcitrant, confrontational. 2 in danger, verb. खतरे में डालना, खतरे से दो चार करना. Put someone or something at risk or in danger. Synonyms: imperil, jeopardize, risk, put at risk, put in danger, expose to danger, put in jeopardy. 3 confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. Synonyms: conflict, clash, brush, fight, battle, contest, encounter, head-to-head, face-off. 4 dissension, noun. मुखालफत, बिगाड़, नाइतफाकी, इख्तिलाफ, फूट. Disagreement that leads to discord. Synonyms: disagreement, difference of opinion, dispute, dissent, variance, conflict, friction, strife. 5 exacerbated. मर्ज में शिद्दत पैदा करना. To make something that is already bad even worse. Synonyms: heighten, irritate. 6 defiance, noun. नाफरमानी, इन्हिराफ, सरकशी. Open resistance, bold disobedience. Synonyms: resistance, opposition, confrontation, non-compliance, disobedience, insubordination, dissent. 7 perilous, adjective. खतरनाक, खौफनाक. Full of danger or risk. Synonyms: dangerous, fraught with danger, hazardous, risky, unsafe, treacherous, precarious. 8 reluctant, adjective. नारजामंद, अड़ियल. Unwilling and hesitant, disinclined. Synonyms: unwilling, disinclined, unenthusiastic, grudging, resistant, resisting, opposed. 9 fraternity, noun. गिरोह, फिरका, अंजुमन, बरादरी. A group of people sharing a common profession or interests. Synonyms: profession, body of workers, band, group, set, circle. 10 indiscriminate, adjective. अंधाधुंध, बिला इम्तियाज. Done at random or without careful judgment. Synonyms: non-selective, unselective, undiscriminating, uncritical, aimless, hit or miss, haphazard. 11 partisan, noun. कट्टर, सख्तगीर, हामी, मुतासिब. A strong supporter of a party, cause, or person. Synonyms: supporter, follower, adherent, devotee, champion, backer, upholder. 12 concerted, adjective. मुत्तफिका, आपस में मिले हुए, तशदा, बाहम. Jointly arranged or carried out, coordinated. Synonyms: joint, united, jointly planned, coordinated, collaborative, collective, combined. 13 hardened, adjective. सख्त क्या हुआ, बेहिस. Very experienced in a particular job or activity and therefore not easily upset by its more unpleasant aspects. Synonyms: inured, desensitized, deadened, accustomed, habituated, acclimatized, used. 14 refrain, verb. रुकना, परहेज करना. Stop oneself from doing something. Synonyms: abstain, desist, hold back, stop oneself, withhold, forbear, forgo, do without. 15 fray, verb. झगड़ा, लड़ाई, रगड़ना. Of a fabric, rope, or cord, unravel or become worn at the edge, typically through constant rubbing. Synonyms: unravel, wear thin, wear out, wear away, wear through, become worn. There seems to be no light at the end of the tunnel as the deadlock between a defiant parliament and a beleaguered Chief Justice continues to endanger the entire edifice. The confrontation is now coming to a head, with lawmakers refusing to release the funds needed to hold elections in Punjab as directed by the apex court. The ball is back in the Chief Justice's court. It's a tricky situation for the top judge,
who is facing dissension within his own ranks as well as a highly polarized political atmosphere in the country. While the credibility of the top judiciary is at stake, the legislature is also not prepared to give in to what it describes as an imperial ruling. The power struggle between the two institutions has exacerbated the political and constitutional crises. In defiance of court orders, some federal ministers have declared that the Punjab elections won't be held on May 14. Not only is the administration unwilling to release the requisite amount to the Election Commission of Pakistan, it has also refused to ensure security for the polls, once again going against the Supreme Court's orders. In the current environment, any contempt action against the civilian leadership will have serious implications for the institution and the state. It is true that a prime minister lost his job and other senior political leaders faced disqualification on contempt charges in the past, but given the point we have reached today, a constitutional breakdown, contempt action could be perilous. Moreover, how would a divided House enforce its judicial writ? The legislative powers of Parliament cannot be questioned. Besides the divisions among the judges, the bar, too, has been critical of some of the Chief Justice's actions. It is not just about the ruling on the Punjab Assembly poll but also the decision taken by an 8-member bench to block the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 passed by Parliament. The bill had proposed clipping the powers of the Chief Justice, which at the moment allow him to unilaterally take suo motu action. It also aimed to make the procedure of the formation of benches more transparent. The bill was suspended even before it came into effect. Such preemptive action is hardly known in our judicial history. The ruling has also been rendered controversial on account of the composition of the bench, which excluded the senior Pune judge and other dissenting judges. Since it was widely perceived that the Chief Justice was reluctant to form a full court for such a sensitive matter, further questions have surrounded the merit of the decision. Clearly, the petition filed by a citizen was taken up prematurely. The bill could not have become law until the President gave his approval. True, it would have automatically come into effect in a couple of weeks even without the President's assent, but the preemptive judicial strike is still puzzling, and has only heightened institutional tensions. Parliament rejected the court's order, describing it as an aggressive attempt of the Supreme Court of Pakistan to abrogate the unquestioned constitutional authority of Parliament to make legislation. Questions have long been raised by the legal fraternity as well as the judges on the concentration of power in the office of the top judge to take suo motu notice and form benches. The past, too, has seen indiscriminate resort to suo motu notice, including on matters that come under the executive's domain. The judiciary's unnecessary involvement in political issues which needed to be resolved in Parliament has made the top court appear controversial to many who now perceive it as being partisan. The most recent example was the suo motu notice taken by the Chief Justice on the Punjab Assembly and KP Assembly elections. The action has been questioned not only by the government but also by various bar associations. There may be a difference of view on whether the changes in rules should be carried out through an Act of Parliament or be left to the apex court to do. But the legislative powers of Parliament cannot be questioned. In case there were questions regarding the validity of the proposed bill, the issue should at least have been put before a full bench. The Pakistan Bar Council has said it would embark on a countrywide movement if the Supreme Court doesn't recall its decision regarding the bill. Bar Council's representatives, including the Supreme Court and High Court bar associations, want the apex court to show restraint rather than becoming part of an accelerating political crisis, and give time to politicians to resolve matters. Unfortunately, the bar itself seems divided on constitutional issues and is probably affected by the political polarization. As the gloves come off, the ruling coalition has launched a concerted campaign against the Chief Justice, saying that he is misusing his judicial authority. A reference has been filed against him and some other judges in the Supreme Judicial Council for judicial misconduct. As things get messy, fears of a complete constitutional breakdown grow stronger. Both sides seem to have hardened their respective positions. Sadly, the clash of institutions has worsened the current impasse,
with the ruling and opposition parties picking their favorite judges. The perception of the judiciary becoming the part of the ongoing political power game is extremely dangerous for the rule of law and the democratic process in the country. While the political leadership must refrain from taking their battle for power to the courts and resolve their conflict through negotiations and in parliament, it is also the responsibility of the judiciary to keep itself out of the political fray. The Supreme Court must restore its credibility and end any perceptions of partiality. It is also imperative to carry out the much-needed procedural reforms that are vital to making judicial functions and the delivery of justice more effective. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, April 19, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. सुरंग के इख्तिताम पर कोई रोशनी नजर नहीं आती क्योंकि एक बेहिस पार्लियामेंट और परेशान हाल चीफ जस्टिस के दरमियान डेडलॉक पूरी इमारत को खतरे में डाल रहा है। ये महाज आराई अब उरूज पर है क्योंकि कानून साजों ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरकार फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया है। गेंद चीफ जस्टिस की अदालत में वापस आ गई है। आला तरीन जज के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, जो अपनी ही सफ़ों में इख्तिलाफात के साथ साथ मुल्क में इंतहाई पोलराइज्ड सियासी माहौल का सामना कर रहे हैं। जहां आला अदलिया की साख दांव पर लगी हुई है, वहीं मुकन्निना भी इसे साम्राज्यी फैसले के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों इदारों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश ने सियासी और आईनी बहरानों को मजीद बढ़ा दिया है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ वफाकी वज़रा ने ऐलान किया है कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे। इंतज़ामिया न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा रकम जारी करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने से भी इनकार कर दिया है। मौजूदा माहौल में सिविलियन क़ियादत के खिलाफ किसी भी तौहीन आमेज़ कार्रवाई के इदारे और रियासत पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। ये सच है कि माजी में एक वज़ीर आज़म को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और दीगर सीनियर सियासी रहनुमाओं को तौहीन अदालत के इल्ज़ामात पर नाअहली का सामना करना पड़ा, लेकिन आज हम जिस नुक्ते पर पहुंचे हैं, इसे देखते हुए एक आईनी टूट-फूट तौहीन अदालत की कार्रवाई खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा एक मुनक़सम ऐवान अपनी अदालती रट को कैसे नाफिज करेगा? पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जजों के दरमियान तकसीम के अलावा बार भी चीफ जस्टिस के कुछ इक़दामात पर तनक़ीद करता रहा है। यह सिर्फ पंजाब असेंबली इंतखाबात के फैसले के बारे में नहीं है, बल्कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से पार्लियामेंट से मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को रोकने के फैसले के बारे में भी है। बिल में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई थी, जो इस वक्त उन्हें एकतरफा तौर पर अज़ खुद नोटिस लेने की इजाज़त देता है। इसका मकसद बेंचों की तश्कील के तरीक़ाकार को ज़्यादा शफ़ाफ़ बनाना भी था। इस बिल को नाफिज होने से पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। हमारी अदालती तारीख़ में इस तरह की पेशगी कार्रवाई के बारे में शायद ही कोई मालूम हो। बेंच की तश्कील की वजह से भी इस फैसले को मुतनाज़ा बना दिया गया है, जिसमें सीनियर जज और दीगर इख्तिलाफी जजों को शामिल नहीं किया गया था। चूंकि बड़े पैमाने पर यह समझा जाता था कि चीफ जस्टिस इस तरह के हसास मामले के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने से हिचकिचा रहे हैं, लिहाजा मजीद सवालात ने फैसले के मेरिट को घेर लिया है। वाज़े तौर पर एक शहरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर कब्ल अज़ वक्त समाअत की गई। ये बिल इस वक्त तक कानून नहीं बन सकता था जब तक सदर उसकी मंजूरी ना दे दे। ये दुरुस्त है कि सदर की मंजूरी के बगैर भी यह कानून चंद हफ्तों में खुद ब खुद नाफिज अलमल हो जाता, लेकिन कब्ल अज़ वक्त अदालती हड़ताल अब भी परेशान कुन है और इसने इदारा जाती तनाव में इजाफा किया है। पार्लियामेंट ने अदालत के हुक्म को मुस्तरद करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के गैर मुतनाज़ा आईनी इख्तियार को ख़त्म करने की जारहाना कोशिश करार दिया। कानूनी बरादरी के साथ साथ जजों की जानिब से भी तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर में इख्तियारात के इर्तिकाज़ पर सवालात उठाए जाते रहे हैं कि वो अज़ खुद नोटिस ले और बेंच तश्कील दे।
माजी में भी ऐसे मामलात पर अज खुद नोटिस का बेदरेग सहारा लिया गया है जो एग्जीक्यूटिव के दायरा इख्तियार में आते हैं। सियासी मामलात में अदलिया की गैर ज़रूरी मुदाखलत जिसे पार्लियामेंट में हल करने की ज़रूरत थी ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत से लोगों के लिए मुतनाज़ा बना दिया है जो अब इसे जानिबदार समझते हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल चीफ जस्टिस की जानिब से पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के इंतखाबात पर उठाए गए अज खुद नोटिस की है। इस कार्रवाई पर न सिर्फ हुकूमत बल्कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशनों ने भी सवाल उठाए। इस बारे में इख्तिलाफ हो सकता है कि आया कवायद में तब्दीलियां पार्लियामेंट के जरिए की जानी चाहिए और उसे सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर मुजव्वज़ा बिल के जवाज़ के बारे में सवालात थे तो इस मामले को कम अज कम फुल बेंच के सामने पेश किया जाना चाहिए था। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल से मुताल्लिक अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो मुद्दगीर तहरीक शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार काउंसिलों के नुमाइंदे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तेजी से बढ़ते हुए सियासी बहरान का हिस्सा बनने के बजाय तहम्मुल का मुजाहिरा करे और सियासतदानों को मामलात को हल करने के लिए वक्त दे। बदकिस्मती से बार खुद आईनी मसाइल पर मुनकसम नजर आता है और शायद सियासी पोलराइजेशन से मुतासिर होता है। दस्ताने उतारते ही हुक्मरां इत्तेहाद ने चीफ जस्टिस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू करते हुए कहा है कि वो अपने अदालती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके और कुछ दीगर जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अदालती बदइंतज़ामी का रेफरेंस दायर किया गया है। जो जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आइन के मुकम्मल टूटने का खदशा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों फरीकों ने अपने अपने मौक़िफ़ को सख्त कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि इदारों के तसादुम ने मौजूदा तातुल को मजीद ख़राब कर दिया है और हुक्मरान और अपोजिशन जमातें अपने पसंदीदा जजों का इंतखाब कर रही हैं। अदलिया के जारी सियासी ताकत के खेल का हिस्सा बनने का तासुर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और जमहूरी अमल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जहां सियासी क़ियादत को इक़्तिदार की लड़ाई को अदालतों तक ले जाने से गुरेज करना चाहिए और मुज़ाकरात और पार्लियामेंट में अपने तनाज़ात को हल करना चाहिए, वहीं ये भी अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो खुद को सियासी मैदान से दूर रखे। सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बहाल करनी चाहिए और जानिबदारी के किसी भी तासुर को ख़त्म करना चाहिए। अदालती कामों और इंसाफ की फ़राहमी को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी तरीक़ाकार में इस्लाहात को अंजाम देना भी ज़रूरी है। मज़मून निगार मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 19 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.